ये वाला कह रहा हूँ ना कृतिका, रियल एक्टिविटी बोलो ना। तो ये वाला एक्टिविटी मतलब दूसरा वाला 5.2 वाला। 5.2 वाला, हाँ ये सही वाला बोला। पूछ रहे हैं। यस। Okay. तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है जिसके अंदर एक बेल जार लिया है, उसके अंदर प्लांट बनता है और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एक बेल जार लिया जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि इधर जब जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है वहां पे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बह जाके, ठीक है। नहीं, इसको अंडरलाइन कर देते। क्या हुआ, नींद आ रही है बस? सर मेरा एक डाउट था। एक मिनट पहले कोई सर समझा। सारे स्पिंक्टर मसल एक ही तरह के होते हैं? एक रुको। हाँ या ना में बता दो जल्दी। क्या हुआ? स्पिंक्टर मसल सारे एक ही तरह के होते हैं ना? हाँ, मतलब एक ही काम होता है, नाम अलग अलग होता है? और कौन सा स्पीकर मसल? जैसे एनल स्पिंक्टर मसल भी एक है। हाँ, एनएस भी होता है। सेम ही है ना? मतलब एनएस स्फिंक्टर मसल वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर स्टमक स्फिंक्टर मसल इनवॉलेंटरी होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो क्लास में साइंस मैम है ना, वो अब सारे एक एक एक्टिविटी समझा रही है, तो मेरे को ये एक्टिविटी 5 तो समझ नहीं। देखो, एक्चुअली में क्या होता है इस एक्टिविटी में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो इस बेल जार के और इस बेल जार को पहले तो उन्होंने कहाँ पे रखा, डार्क रूम में रखा, फिर उसको सनलाइट पे लाया। जैसे ही सनलाइट में लाएंगे ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि डार्क रूम में था तो कोई फोटो वो रिएक्शन हुई नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। ऑब्वियसली प्लांट रेस्पायर किया, रेस्पायर करता तो प्लांट क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इस जार के अंदर क्या भर गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया होगा, ठीक है। जैसे ही वो धूप में आया, अब उसी प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया और खाना बनाना स्टार्ट किया। पर वो इस केस के अंदर हुआ, इस केस के अंदर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट रखा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च जो कि स्टोरेज होता है किस चीज के लिए, फूड के लिए, वो हुआ ही नहीं। Got it? So basically, what happened in these two experiments, that when there was a carbon dioxide which was released in the dark room during respiration, in this case, the carbon dioxide which was there, it is absorbed by this salt called as potassium hydroxide. In this case, it was there. Now, when they came into the presence of sunlight, when they came in the presence of sunlight, they will do their photosynthesis process. Now, this jar has carbon dioxide, but this jar doesn't have carbon dioxide because it is absorbed. Obviously, when it will come in the presence of sunlight, when you will pluck this leaf and when you will pluck this leaf, who will have starch? This will have starch because food preparation happen in this plant, and because food preparation happened the food got stored also in the form of starch. But in this case no, because no carbon dioxide, no food preparation, no starch is present, like that. Got it? No? यस सर, गॉट इट। अमर, यस। तुम्हारा बताओ कौन सा स्पिंक्टर मसला पूछ रहे हो? नहीं हो गया।
नहीं हुआ। स्फिंक्टर मसल का काम क्या था, एक बार वापस बताओ तो। स्फिंक्टर मसल का काम है, जैसे कि हम थैली में बांधते हैं ना गांठ, हाँ ताकि बाहर ना आए, हाँ। वही चीज है। वो उसको ऐसे कवर अप कर देती है, सच दैट कि कोई चीज बाहर ना आए। तुमने वो देखा है पेंट बॉल गन? हम्म। पेंट बॉल गन में जब ऊपर से वो उसको रिफिल करते हैं पेंट बॉल्स को, तो वो वो ऐसा होता है कि वो बाहर ना है बॉल्स, वो हाँ। अंदर ही रहे। ठीक है, वैसा ही काम होता है स्फिंक्टर मसल का, कि एक ढक्कन की तरह काम करती है, ढक्कन की तरह इसको बांध दिया सच दैट वहां पे काम होता रहे, और जैसे ही वो काम हो जाए तो वो ढक्कन खुल जाएगा और फिर वो आगे हो जाएगा ओके। ऐसे। यस, नेक्स्ट डाउट प्लीज। नो डाउट। नो डाउट। So we were left with excretion topic. Now excretion. So excretion. What is the excretion? So basically, I'll tell you one thing. Excretion is the way that how our body remove the unwanted substance. Like our body remove what? Unwanted substance, which is not useful for our body. If it will be there in our body, then it will harm our organs and organ system and all. So, for example, can you tell me any excretion process that we do, like pass out the urination pass is excretion. Any other thing? The sweat. Sweating, yeah, sweating is removal of the excessive salts and water from our body. So, yeah, is it also the excretion part? Anything else? Undigested food that is excreted out, removed from our body, that is also excretion. Any other else? तो सेल्स Carbon dioxide. Huh? हाँ वही सेल्स। Yeah, carbon dioxide. We are exhaling, no? We are यस। removing carbon dioxide from our body. That is also excretion. So excretion is not only about urine or the undigested food, but excretion is also about the carbon dioxide gas which we exhale from our body. It is also the excessive salts or acidic salts which is present inside our body that is removed. Are you getting this? So yes or no? Hmm? Yes. So this is called as excretion. So right now we will learn excretion in human beings means excretion by the kidneys. Now we have two kidneys. I know people sell their kidney for their iPhone, but we have two kidneys. Okay, two kidneys do their function properly so that it can remove the nitrogenous wasted, creatinine, and uric acid. Everything is filtered out by the kidney. Kidney is like a sieve. Like when we are making tea, when we have to pour out the tea into the cup, we put sieve, that channi, okay, so that when tea will pass it out, all the chai patti be on the filter, like on that sieve, and the chai will filter it out into the cup. That is a simple thing. In the same way, kidney work like that. Okay, kidney sieved the blood. Okay, now remember this thing without opening your mouth or without yawning, that when the from the heart from the heart, the blood will go into the kidney. It's called as, and it's not necessary from heart only, but basically what happens that artery used to go into the kidney, not vein. Okay, artery used to go into the kidney, that so that filtration process can be occur. Okay, So can you repeat it? artery. What is artery? Blood vessels which take blood away from the heart. That arteries goes into the kidney for the filtration process. For the filtration process. So you guys can see this, that excretion process that we are going to learn
It's have two pairs of kidney. Then ureter. Then urinary bladder. Urinary bladder is also an important organ. What is urinary bladder? Urinary bladder is the organ. It's a muscular organ. It is voluntary also. Voluntary means if we are on the way and there's no place for the urination, means washing. For the washing, there's no place. So we can say that, oh, brother, control will go to some place, good place, and then we'll go and pass it out. Okay. So urinary bladder is a muscular organ which we can control it. We can voluntary. Okay, but it is not mature, or it is, we can say, degraded. Not mature in baby, like small baby. Uh, Wherever they are going, just like that. Okay, and degraded in the old humans, like old age human. It is degraded. Now they are not able to sense it, and then brrr, in the bed, everything. So basically, the voluntary urinary bladder is a voluntary organ that is used to control the urine for the pass out. Are you getting this? Yeah. Say yes or no. Okay. So we'll learn everything. Okay, we'll learn everything. So who will read this? Amar, your reading is fabulous. Please read this. Uh, Page number Page number 96. 96. Excretion in plants. Like excretion na. Hmm. 96. Excretion. We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. Different organisms use various strategies to do this. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion. Underline this. Underline this quickly. That many unicellular organisms remove their waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. Okay, they do not have specialized excretory organ. They usually just excrete it by the diffusion process. Sir, the Yes. amoeba excretes with the help of diffusion or with the egestion? With the Egestion is the process. egestion is the process, but it happens through diffusion. In amoeba also. Yeah, it's unicellular, no? Yes. So through diffusion only, like if the nitrogenous waste inside the body, it's more, and outside is less. So high concentration to low concentration. Pass it along. Yes. अमर कितने बजे आते हो स्कूल से? 4 बजे 4:10. फिर फिर आके क्या करते हो? थोड़ा सा खाता हूँ. फिर तो बस ट्यूशन. Hello. Sorry, my network went off because Yeah. my mom switch off. पढ़ूं. Yeah, yeah. रुको एक मिनट. कितना बड़ा दिख रहा है. तो कितने बजे आते हो? 4 बजे आते हो? 4:10. फिर थोड़ा सा खाता हूँ. फिर तो बस करते करते 4:40 हो ही जाता है. अच्छा, सोते नहीं 10-15 मिनट? वो सोने के चक्कर में तो लेट होता है. अच्छा, नहीं नैप ले लिया करो 20 मिनट का. और 20 मिनट में 5 मिनट आपका जाता है. 4:45 इसलिए आता हूँ मैं क्लास. अच्छा, यस यस. तो अभी आके मुंह हाथ धो के बैठा करो. फिर मेरी क्लास के बाद क्या होता है तुम्हारा?
आपके क्लास के बाद तो मैं पढ़ता ही हूँ, चलो सुबह खेलने जा। सुबह खेलने जाते हो? 6 से 7:30। चलो पढ़ते अभी। चलो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स रीड करो। The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of uterus, a urinary bladder, Underline this. and a urethra. Underline this. It includes a pair of kidney, a pair of ureterus, urinary bladder, and urethra. This is human excretory system is made up of. Yeah. Kidneys are Read this. located in the abdomen, one on either side of the backbone. One on either side of एक बैकबोन में होता है। Either side मतलब बैकबोन के इस साइड है उस साइड। हाय हाय इंग्लिश। पीछे होता है। One on बैकबोन के एक राइट साइड है और एक बैकबोन के लेफ्ट साइड। It is present on the right side and left side. urine produced in the kidneys passes through the ureterus into the urinary bladder where it's stored until it is released through the urethra. How is urine produced? The purpose of making urine is filter out waste products from the blood just as CO2 is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. Underline this. Okay. Underline this thing. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. Capillaries. So basically, it is called as this nephron. So we learned that in lungs, alveoli, where the exchange of gas happen, like the oxygen in the lungs will go into the blood, and the blood carbon dioxide will go into the lungs. That is the exchange place, na? In the same way, a kidney has thousands of nephrons. That thousands of nephrons are responsible for the for what? For the filtration. So now I will explain this. So listen it carefully. I am explaining this. Okay. So you guys can see this diagram. Can you see this diagram? Is it very Yes. easy? Now you guys can see it's a renal artery. Okay, it's an artery which is coming on the Bowman's capsule. On the Bowman's capsule. Okay. So you. This artery is containing oxygenated blood or deoxygenated? Artery. What is artery? Oxygenated blood. Oxygenated blood. Because only one artery has deoxygenated blood, which is pulmonary artery. Rest all the arteries have oxygenated blood. So what is this? Oxygenated blood. Now what will happen? You can see this, that these arteries is going to the Bowman's capsule and then it will filter it out. Okay, filter it out salts, filter it out some potassium salts or nitrogen salts or some blood cells also, which will go and which will filter it out on the Bowman's capsule. Then you can see this arrow. Can you see this arrow? This arrow means that this yellow part, in this yellow part, the salts are now passing it. And you can see that there are some more red vessels are there, which is like लिपटे हुए एक दूसरे में क्या है लिपटे हुए. What does this mean? Because here many of the salts, many of the cells get also filtered out, which is useful for our body. So this red part, they absorb it again, like proteins, like any salt, which is got filtered it out by the Bowman's capsule. It will get absorbed, and then it get absorbed, and then it became a vein. How It became a vein because it is going to the heart. So only one artery is going into the filter. Not one artery means the cluster of arteries is going into the kidney, filter it out, go into the heart, then again into the lungs, then again everywhere else. Simple as that. Okay. And the last part, which is totally the urine part, like it has water,
nitrogenous salts, it has excessive salts, or it have uric acid, urea, that all will pass it through the collecting duct. And this will go into the urinary bladder and then through the urethra. It will pass it out. Got it? Okay. No. Yes, sir. Got it? So we'll read this again, right? Like this. Okay. Read Sir, this it is from here. a cluster of very thin-walled blood capillaries because oxygenated blood is passing. That's Here. why. Here, this is the cluster of thin capillary form. So that the unwanted salt will be passes through the Bowman capsule and go through the collecting. Okay. Read it. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule. Hmm. Cluster in the kidney is associated. Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has large number of these filtration units called nephron packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid salts, and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of the dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out with the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control. As we have discussed elsewhere, as a result, we can usually control the urge to urinate. So this is the way of how the whole filtration happens. Now, yeah, this is also the important thing, that if you are not drinking, like, so sometimes we have urine of transparent, like transparent, and sometimes it is dark yellow color. Okay. So if it is dark yellow color, it is a sign that your body is dehydrated. Means either the dehydrated, or either if it is continuously, if it is coming, you have a chance of having jaundice. Bile pigment. So it is there. So what is jaundice? Jaundice is, it's a type of disease in which bile pigment, we know the bile juice released by the liver Hmm. for the emulsification of fats and Fat. for the alkalinic medium of the food. Yes. It releases a lot. And because of that, the yellow color came into your eyes, into your urine, and gives the yellowish color. Okay, that is the one disease which happened. But the second disease is, like, you are dehydrated. When you will go and pass out the urine, it will give a burning sensation also. Why? But why? Because the urine inside the urinary bladder got because you're not drinking water, so your body will absorb the water from the urine, and that urine get concentrated. That get concentrated, and when the concentrated urine pass it out, it will give burning sensation. It will become yellowish color. It means that your body is dehydrated. You need to drink a lot of water. Got it? Yeah. Say yes or no? Yes. Okay. Now, yeah, any problem in this paragraph, guys? Okay. Now we'll read this. Hemodialysis, which is also called as artificially kidney. Now, what is the role of hemodialysis, or what is hemodialysis? So basically, because of some reason, the kidney get destroyed, and if kidney get destroyed, then there is nobody there for the filtration of our body. See, a person has two kidneys. He can live on one kidney, but if both the kidneys are not there, no filtration is there. If no filtration is there, then uric acid, these all will get accumulated in our body, degrade the organ, then we will have a lunch in heaven.
Are you getting this? So Yeah. basically, kidney is very, very essential for the human being. And I observe it also. A person who is about to die, na, first thing that is targeted is kidney only. Their kidney will fail. Kidney fails. Kidney is not working. Okay. So kidney is very essential because kidney is helping us to the filtration process. No kidney, no filtration. No filtration, body will accumulate it with uric acid, and in the end, there is the end. Are you getting this? Yes. Okay. So we'll read it. So for example, if a person who has no kidney, so he has two options, either to take a kidney transplant. Kidney transplant is not like this thing that if you will go into the market and you will buy the kidney. Yeah, you need donor also, and the all the communication, all things necessary. Okay. But the second is option is also there, which is in 3 weeks you have to go. No, in 3 days, 3 to 4 days, you have to go and visit hospital again and again. That is called as artificial kidney or hemodialysis. What it is called? Hemodialysis. Now, what is hemodialysis? Hemodialysis or artificial kidney is basically happen that you can see that there's a machine in which the machine like from the artery it will go into the pump, it will go and it will filter it out, and the excessive salt will be passed and it will be collected, and the fresh dialyzing solution they will add it and it will go into the uh, human body. So now this is becoming the external kidney process. Are you getting this? Yes. So we'll read this. Geetika, please read this. Yes, sir. Kidney are vital organs for survival. Survival factors like infection, Several. injury, or restricted blood flows to kidney reduce the activity of kidneys. That leads to accumulation of poisonous waste in the body. We can even lead to death. In Which case, can? We can't. We cannot. Which can? You are reading small words wrong. It's which. It is this. It is several, not survival. yes, sir. Hmm. Even leads to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. Artificial kidney contains a number of tubes, which is semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is devoid of nitrogenous gas waste. The patient blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood passes into the dialysing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back in the patient. This is similar back to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in the healthy adult, the initial filtrate in a kidney is about 180 liters daily. However, the volume actually excreted is only a liter or two a day because the remaining filter is reabsorbed in the kidneys. Yeah. So only 1 liter is pass it out, but 180 liter of the blood, like in normal female has 5 liter, 5 to 5.6, 5 to 6 liter blood, and male has 6 to 7 liter blood. Okay, liter blood in a body. So it will like if it is 8 times, so 9 times, for example, 9 liter. It is not there 9 liter. So 20 times, 20 to 25 times, it will filter. The same blood will filter in a day. Are you getting this? No. 20 to 24 times
the blood will get filtered in the kidney. Now, excretion in plants. Yes, beta. Sir, it is said that the hemodialysis, the machine which can't reabsorb the materials, Yeah, means means like I told you, na, the salt, the cells which got filter it out in the Bowman's capsule, it yes. get reabsorbed. It get reabsorbed because of the red artery was there. But in this dialysis, there's a difference is that there is no reabsorption happen. If it is filter it out, then it will filter it out. If it is excess water, not excess water, that is why we are giving the dialysing solution also, because the water is coming out. The water is coming out, na. So we are giving dialysing solution also, so that the uh, water inside the body will remain same. Are you getting this? So Yes. if 2 liter is coming out of the body, then we are giving 2 liter in the body also, so that water balance be safe. Sir, Got it it? says that a healthy adult initial filtrate is about 180 liters, and then it says that the actual volume is only 1 liter. No, no. What is saying? I'll repeat this again. It's saying that normally in a human healthy adult, the initial filtrate is in the kidney is about 180 liter daily. Means 180 liter. Like we have six, for example, we have 5 liters blood. 5 liter blood. So that 5 liter blood will get filter it out. How many times? It will filter it out 30 times. 30 times. For example, 30 times from the kidney. And out of this, only how much is excreted? 1 liter or 2 liter a day. Means what we are excreting out, that is 1 liter only. It's not blood, it is water plus the unwanted salts. The rest things are मतलब reabsorbed. मतलब फिल्टर तो बहुत बार होता है. मतलब 180 लीटर खून बार बार उस किडनी में जा जाकर उसको 180 बार हो गया. 5 लीटर खून बार बार उसमें 30 बार जा जाके फिल्टर हो रहा है एक दिन में. पर उसमें से सिर्फ जो पानी और सॉल्ट है वो 1 लीटर ही निकलता है. समझ में आया? नहीं आया? Yes. आया Ritika? Yes. Yes, sir. Okay. Now we'll read the excretion in plants. Read it, Ritika. Plants uses complete different strategy for excretion than those of animals. Oxygen itself can be through Not. second. क्या हो गया? क्या हो गया गीतिका? नहीं ठीक है. गीतिका आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Sir, I can't see the page. Can't see the page. Now? Can you see it? Sir, it is. Network. अमर. मैं तो पढ़ूं? फिर तुम्हें वो उसको आने तो दो. यार चैप्टर कंप्लीट है. कृतिका अभी दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, read it. Of as a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier that how plant deals with oxygen as well as CO2. They can get rid of excess water by Transpiration.
क्या वो एनसीईआरटी अच्छा नहीं है आपका कृतिका? सर उतना ये नहीं है। क्लियरिटी नहीं है? सर एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा ओल्ड है शायद। प्रिंटिंग अच्छा नहीं है। ओके ओके, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो ये Yes. चीज ध्यान रखना, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, ऑक्सीजन भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। हम्म, कार्बन डाइऑक्साइड कब करेंगे? जब वो रेस्पायरेशन करेंगे, जैसे नाइट में। हम्म, नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उनके लिए वो यूजफुल नहीं है, वो उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। पर दिन में वो क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, वो उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाएगा। ये चीज याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा, ध्यान रखना कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द टाइम। CO2 ठीक तो है। उनके काम में आता है ना। रात की बात करेंगे तो रात में वो क्या रिलीज कर रहे हैं? अगर CO2, उनका काम में आता, अगर उनके काम में आता CO2, तो एब्जॉर्ब करके रखता है ना। वो क्यों रिलीज करते हैं? वो रिलीज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात में उनका काम ही नहीं है। ओ, उनका काम CO2 का दिन में है। तो ये चीज ध्यान रखना। Okay, in night they don't use the carbon dioxide, they use oxygen and they release carbon dioxide. So in night CO2 is a excretory product, in day oxygen is the excretory product. Okay, and they also get rid of the excess water by transpiration. So if excess water is there, it will get rid of by the transpiration. So these three are the way. For other traits, plants use the fact that many their tissues consist of dead cells, and they can even lose some parts such as leaves. So sometimes leaves become yellowish in color and it get plucked out of the tree. Like वो टूट के गिर जाती है. Why? Because what plant do? Plant store the excretory product in the leaf, and when the leaf is fulfilled, it become yellow in color. The branch or the petiole will break and it will fall. Got it? yes. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored in the resins and gums. In resins and gums also, some of the waste products are stored. Okay, plants also excrete some waste substance into the soil. Some soil they can also excrete the some waste products in the soil. समझ में आया अमर? Yeah, अकबर एंथनी? chapter complete. चैप्टर कंप्लीट। Yeah, तो अब yeah. ये तुम्हारा होमवर्क है, No, sir. ये आपका होमवर्क है, मैसेज कर देना अमर। मैं, हम्म, ओ sir. ये भी। ये आप करवाओ हमको अभी। यार सर, ये तो होमवर्क कौन देता है? तुम्हें पता है ना, मैं देता हूँ। नहीं देता, आप झूठ बोल रहे हो। हम्म, Indian human beings are a part of a system of excretion, अब trans. इसके नोट्स लिखवाऊं मैं? No. आवाज आ रही है मेरी कृति का? Yes, sir. Sir. हम्म I can't understand the pyruvate, you know, pyruvate. हम्म वो जो 6 कार्बन होते हैं, हम्म पाइरुवेट में 3 कार्बन जाते हैं, हम्म बाकी 3 कार्बन कहाँ जाते हैं? बाकी 3 कार्बन का वो 3 और 3 में स्प्लिट हो जाते हैं। दैट 6 कार्बन मॉलिक्यूल बिकम 3 and 3 कार्बन 3 पाइरुवेट और 3, पायरुवेट। 2 3 पाइरुवेट। हाँ, 1C6H12O6 जो होता है वो 3 और 3 पायरुवेट में बदल जाता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला Sir, जाता है। यस बेटा, repeat everything. आई एम रिपीटिंग अगेन that Amar was asking. Amar Sir, asked me can in you English. repeat? Yes, I will repeat it again. Amar was asking that, sir, the 6 carbon what like glucose was there, and the 3 carbon pyruvate was it will form. So where the next pyruvate will go? ठीक है, मतलब जो आखिरी का 3 वाला पायरुवेट है वो कहाँ चला जाता है? तो बेसिकली वन ग्लूकोज ब्रेक इन इनटू 2 3 pyruvate 3 carbon molecule.
that is become pyruvate. So one glucose, 2 pyruvate will be there. फिर प्रेजेंस ऑफ O2 में कितना पायरुवेट लगता है, कितना कार्बन लगता है? एक। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ O2 में प्रेजेंस ऑफ O2 में हाँ एक पायरुवेट, एक कार्बन। नहीं एक पूरा पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन एक पूरा लगता है। एक पूरा पायरुवेट 3 काम करते हैं ना, लैक ऑफ O2, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ O2। छोरे, एक पायरुवेट हाँ ऑक्सीजन के साथ जब करता है तो CO2 और वो बनाता है। हाँ, ये एक कंडीशन हो गई अलग, प्रेजेंस ऑफ O2 है। प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक पायरुवेट पूरा मॉलिक्यूल जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। दूसरी कंडीशन हो गई, एक पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा तो इथेनॉल और एनर्जी क्रिएट करेगा। CO2। और तीसरी कंडीशन हो गई, हाँ तीसरी कंडीशन हो गई, एक पायरुवेट जो सिर्फ लैक्टिक एसिड क्रिएट करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। दो क्या हो गया ATP, कृतिक आज? हाँ दो 2 ATP। ATP। हाँ, हाँ तो ये एक पूरा, ये पायरुवेट करता है, एक पायरुवेट, ऐसे 2 पायरुवेट करते हैं। हाँ, तो टोटल 3 पायरुवेट हो रहे हैं यहाँ पे। कैसे यार सर? अरे एक पायरुवेट 3 उसके का। लिए क्या कर रहा है अमर, कंफ्यूज हो रहा है। एक पायरुवेट 3 कार्बन है। हाँ ये पायरुवेट तब 3 अलग अलग समय में काम करेगा ना, जब प्रेजेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। नहीं यार, क्या कर रहा है छोरे? बताओ। पायरुवेट है, हाँ। पहला पायरुवेट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम्म ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। हम्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ऑक्सीजन एंड एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, ठीक है। यस। ये एक ही पायरुवेट मॉलिक्यूल है जो किया। हम्म अब हम लेते हैं ईस्ट का एग्जांपल। ईस्ट के अंदर हाँ, तो एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता नहीं है। तो एब्सेंस। ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट बनेगा, ईस्ट के अंदर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा और क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस इथेनॉल और एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी, ATP। ठीक है। ठीक है। ये हो गया दूसरा सिचुएशन। हाँ, तीसरा सिचुएशन होता है उस मसल में जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। तो प्लस यहाँ पे पायरुवेट 3 अलग अलग पायरुवेट है जो 3 अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हुआ। अलग अलग टाइम पे ना। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम। ओके ओके। गीतिका आज नेटवर्क बंद है तो कोई बात नहीं, आप अपना टर्न ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा ऑफ रख सकते हो। सर क्या टॉपिक चल रहा था? अमर बोल रहा था कि सर पायरुवेट को हम मतलब अ, मतलब वो जो पायरुवेट की 3 पाथवे थे ना, उसको लग रहा था कि वो एक ही पाथवे, एक ही पायरुवेट है जो पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाता है। ऐसा अमर सोच रहा था, तो उसकी सोच को मैंने बदला, उसको बताया कि वो 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। एक ह्यूमन बींग में हो रहा है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जा रहा है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग के अंदर हो रहा है। फिर दूसरा था ईस्ट के अंदर, जो यस। ईस्ट के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और तीसरा था जो मसल्स में हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जो लैक्टिक एसिड क्रिएट है। तो उसका वो डाउट। ओ हो गया। और कुछ डाउट देती का आपको इस चैप्टर में? सर आप क्या पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 बोल रहे हो? 98 में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एक बार सुनना सकते हैं? ओके, फटाफट समझा देता हूँ मैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले क्या क्या एक्सक्रीशन होता है कि इन डे टाइम में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो उनके लिए एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। इन नाइट टाइम में क्या एक्सक्रीट करते हैं? इन CO2। नाइट टाइम में दे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। अगर उनके पास एक्सेसिव वाटर है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो उसको लॉस करवा देते हैं, ताकि उनके पास पानी की, क्योंकि ज्यादा पानी है तो पानी बच जाएगा। फिर है चौथा कि जैसे कि कुछ कुछ लीफ येलो कलर की हो जाती है,
क्योंकि उसके अंदर जो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो अंदर भरते जाता है। फिर जब एक समय आएगा कि लीफ पूरी येलो हो जाएगी तो लीफ उस पेड़ से टूट जाएगी, तो वो भी उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर कई बार वो रेजिन्स और गम्स के रूप में अंदर स्टोर कर लेते हैं प्लांट। ठीक है, तो वो रेजिन्स और गम्स उनके लिए एक्सक्रीटरी है, पर हमारे लिए वो बहुत कारगर होते हैं क्योंकि हम उससे दवाई वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, जैसे रबर प्लांटेशन में जो रबर है वो शायद उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, पर हमारे लिए काम की है। ठीक है, फिर आता है दे आल्सो एक्सक्रीटेड सम इनटू द सॉइल, कुछ सॉइल्स में वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अमर कोई डाउट बोल बेटा। नहीं है। नहीं है, कृतिका का तो है। सर यस, सो जो प्लांट्स में से ड्यू निकलता है वो क्या है, मतलब पानी निकलता है ना सुबह सुबह? वो प्लांट में से थोड़ा निकलता है, वो तो एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर है, ठंड के कारण जो वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और प्लांट्स के ऊपर आ जाता है। प्लांट थोड़ी ना पानी निकालेंगे स्वेट की तरह। निकाल देना ट्रांसपीरेशन। वो तो धूप पड़ने से होगा, रात में थोड़ी ना होता है ट्रांसपिरेशन। रात में कैसे होगा ट्रांसपिरेशन? बल्ब लागू पार्ट दो। बस इतना ही दिमाग है, लग ही रहा था यही बोलेगा, बल्ब सर लगा दो एक्सेस रात। वाटर क्या है? एक्सेस वाटर जब धूप पड़ती है उनपे, तो एक्सेस वाटर जो है वो लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है प्लांट के अंदर। समझे अभी? नहीं, नहीं सर। और कुछ डाउट बेटा? ट्रांसपिरेशन। सर वो पहला वाला चैप्टर के एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले, प्लीज प्लीज। कौन सा वाला चैप्टर? केमिकल? रियल रियल नंबर वाला है ना, एक दो क्वेश्चन वो वर्ड प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो वाला डिस्कस कर सकते हैं। यस। वर्ड प्रॉब्लम देखा, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ। तुम्हें पता 9th की एनसीईआरटी चेंज हो गई? यस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत खराब है यार, अभी मैंने देखा उसमें जोजनास योजनास बनाया हुआ है। तो नाइन्थ में मैथ्स में भी तो आ रहा है वो स्टैंडर्ड और एडवांस दो अलग अलग आ रहे हैं। 10th में या नाइन्थ में। 9th में? नाइन्थ के अच्छा, मैथ साइंस दोनों में आ रहा है। बहुत खराब होने वाला है फिर बेचारे बच्चों के साथ। हम सही समय में निकल गए। आगे, तो हम ये वाला क्वेश्चंस करेंगे, गीतिका को आता है तो गीतिका खुद करेंगे, ठीक है? कौन से क्वेश्चन था? बताते हैं। अरे Traffic lights at three different road crossings change after every 46, 48 seconds, 70 seconds, and 8 seconds respectively. If they all change simultaneously at Here's the question. Okay, traffic lights at three different roads crossing change after 48 second, 50 second, 72 second, and 108 second respectively. If they all change at 820 hours, then when will they will change again? तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या भावना आ रही है कि कब वापस अगेन होगा, मतलब वापस वो क्या करेंगे, मीट करें एक साथ बजेंगे। तो अब एक साथ बीच करेंगे तो क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो किसका एलसीएम निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे ये एक तो 48 का, 72 का और 108 का। अब इसका एलसीएम निकालो, निकालो यूनिट निकालो। कन्वर्जन करना है। क्यों करना यूनिट कन्वर्शन, सब तो सेकंड्स में ही है ना। ओके 48।
432. हाँ, सो मतलब 432 सेकेंड्स के बाद वो वापस एक साथ बचेंगे। तो एक साथ लिखेंगे। सो ओके। पहले वो 8:20 को बजे, 8:20 पे बचे, तो वापस कब बचेंगे? आफ्टर 432 सेकेंड तो 432 सेकेंड्स को आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट्स में करना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय 60 करूं। कृतिका समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, क्यों नहीं? 7.2 मिनट मतलब 827.2 मिनट में बचे, 827.2 सेकेंड में। बस यही है। बस हो गया। कृतिका, आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir, ये इसका ट्रिक है sir, अमर। answer. यस कृतिका। Sir, answer A. Sorry, 8:27 or 12 hours. 12 hours। 12 12 hours। तो 8:27। Second, sir. Second. हाँ, 12 seconds। या एनीबॉडी एनी डाउट? वेट एक और क्वेश्चन चाहिए अमर ऐसा? HCF का तो मैं दूंगा तो तुम्हें पता ही होगा HCF होगा। अपने हिसाब से दो बस। हम्म Question asked for the maximum largest divide. तो ये चैप्टर बोर्ड्स में कितने नंबर का होता है? 6। कितने? 6। हम्म सबसे ज्यादा कितने नंबर, कौन से नंबर का होता है चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं छुट्टियों से पहले, जून की छुट्टियों से पहले तुम्हें कराऊंगा, ताकि पूरी जून आप उसका प्रैक्टिस करोगे। आज छुट्टी कितने Sir, दिन hard category. हाँ नहीं, अरे हाँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा होगा, क्योंकि तुम्हें मैं आउट ऑफ द सिलेबस भी कराऊंगा। तो क्या अलग करो अमर। what Nice. What largest is the largest three-digit number that is exactly divisible by the HCF of 12, 34 and 36? 24 and 36. So, what is the largest three-digit number? 999. yeah And what is the HCF of 24 and 36? You have to find. yes And then you have to divide it. And that should completely divisible. Like, tell me first, find the HCF of this and this. 24 and 36. 72 72। अब 72 को 999 से डिवाइड करो। पक्का 72 है। HCF बोला है, LCM नहीं, बिकॉज अरे HCF अरे बोला। अरे अरे 24.36 2 and the 2 बोलो कृतिका, क्या है HCF आपका? 72 है अमर, HCF क्या कर रहा है बेटा? सर 2 का क्यूब लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे। 2 क्यों 8 लेंगे? 6 अरे HC, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 का। HCF क्या 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 है? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 टू into 2 into 2 into स्क्वायर, 3 सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3। एंड 36 का क्या आएगा?
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। समझ में आया अमर? सर आपने गलत करा। क्या गलत किया? 24 में 2 की पावर 3 इंटू 3। 22 की पावर 3 ना, हाँ तो वही तो मैं भी करा था। तो वही तो मैंने लिखा। 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर 72। नाउ व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम? 2 की कॉमन पावर इज 2 एंड HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन कि नहीं बेटा, अरे कॉमन विद द हाईएस्ट लोएस्ट पावर। अरे हम्म, ये नहीं। होता है मतलब HCF का। और LCM का मतलब होता है कॉमन विद हाईएस्ट पावर, कॉमन विद हाईएस्ट पावर एंड अनकॉमन ऑल्सो, एंड अनकॉमन ऑल्सो। तब इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और इसमें लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, सो होगा 2 की पावर 2। अब ये भी कॉमन है, इसमें क्या है? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, ये हो जाएगा HC। समझ में आया अमर? यस। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें मिल गया HCF 12। अब अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 12, 12 8 जा 96, 3 बचा 39, 12 3 जा 36 बचा 3। पर 3 तो फुली डिविजिबल नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें मैं 3 माइनस कर दूंगा, तो 999 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 996। तो मीन्स 996 एक प्रॉपर लार्जेस्ट डिजिट नंबर है जो 24 और 36 के HCF यानी 12 से फुल डिविजिबल है। ओ समझ में आया बेटा? अंडरस्टूड। तो मैं कुछ क्वेश्चन भेजूं तुम लोगों को इस चीज के? यस। ठीक है, तो वो होमवर्क भी डाल देना लाइफ प्रोसेस के, और इसके क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा। लाइफ प्रोसेस है कल का होमवर्क। ठीक है। अब तुम्हें मंडे को ही मिलना है, तुम देख लो मंडे तक मुझे करके दे देना। देते तो हो ओके। नहीं, कोई सेंड करता ही नहीं वो मैं करता हूँ जाता ही नहीं है। है। मम्मी से बात करो तो लगा जल्दी। वो मम्मी से इंटरनेट बात चलता नहीं ही नहीं कर, है के सामने। मम्मी से बात कर। चल समझ में आया बेटा यस। किसी का? कुछ और डाउट Yes, है? sir. कोई डाउट नहीं है? सैटरडे को इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का टेस्ट है, प्लीज पढ़ना। सैटरडे। नॉट फ्राइडे, Sir, फ्राइडे 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 नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट। ठीक है, और मैं पहले ही बता देता हूँ पेपर हार्ड आएगा ओके। प्लीज। चलो फिर हम मिलते हैं, कब मिलेंगे हम? मंडे। देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर, ओके, सायोनारा, बाय बाय, मंडे।